हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा वो है क्रिप्टो एक्सचेंजेस। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ओके, सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, द बेस्ट चॉइस डिपेंड ऑन व्हाट यू वांट टू डू। तो अगर आपको भी क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप चैट करके देख सकते हो। और हमारा जो वीडियो रहेगा ये वाला, वो आप लोग को जस्ट जनरल नॉलेज हम प्रोवाइड करेंगे। से देखो, बिगिनर्स, Coinbase and Kraken are also known user-friendly interface and strong security. Coinbase नाम सुना होगा और Kraken, ठीक है। देखो आप लोग कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज के बारे में, तो बिगिनर्स के लिए, ठीक है, हम बता रहे हैं। लो ट्रेडिंग फीस, जिसमें Binance वेर अवेलेबल एंड Bybit often offer competitive fees and advanced trading tools. Advanced traders, OKX, BitGet, Kraken provide futures margin trading and sophisticated order types. Privacy and DeFi, देखो, decentralized exchanges such as Uniswap or Ethereum compatible networks and PancakeSwap, BNB chain let you trade directly from your crypto wallet without depositing funds with a centralized platform. ठीक है। When choosing an exchange, consider whether it is available in your country, security features, trading and withdrawal fees, which cryptocurrency it supports, whether you need spot trading only or also future staking. If you tell me your country and what you want to do, buy Bitcoin, trade, stake, use future. देखो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे देखिए आप यहाँ पे Binance, large selection of coins, spot future, सब कॉइन्स के बारे में यहाँ पे आप लोगों के साथ देखो। यहाँ पे Binance के बारे में फ्यूचर स्टेकिंग, ठीक है। Coinbase, अगर एक एक पे क्लिक करते जाएं तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग को आप लोग को जस्ट बताना है। Coinbase बिगिनर फ्रेंकली, पब्लिकली लिस्टेड इन द यूएस का जो ये वाला है ना, वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही पाओगे, Coinbase ये वाला हो गया। इज a public traded cryptocurrency exchanges and financial technology company that provides platform for buying and selling, storing and managing digital assets. फाउंडेड कितना साल हुआ, 2012 को इसको फाउंडेड हुआ, ठीक है, ये वाला। देन वी आर गोइंग फॉर Kraken के बारे में देखो। Kraken से आप लोगों को स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन फॉर सिक्योरिटी एंड एडवांस ट्रेडिंग, ठीक है। देन आप लोग के साथ देखिए यहाँ पे OKX, स्पॉट फ्यूचर्स, देन Web3 वॉलेट एंड डेफी इंटीग्रेशन, BitGet, कॉपी ट्रेडिंग एंड डेरिवेटिव्स, Qcoin, वाइड रेंज ऑफ altcoins, Gate.io, extensive token listing, MEXC, frequently list newer tokens, HTX, formerly known as UOP, okay, Bitfinex, advanced trading features, Crypto.com, exchange apps and Visa card ecosystem, Gemini, US based with a focus on compliance, Bitstamp, one of the largest running exchanges, Whitebit, European exchange, Lbank, broad altcoin selection, Coinex, global cryptocurrency exchange, then Fimex, spot and derivatives, XT.com, global digital asset exchange. Now decentralized exchange देखो, Uniswap, PancakeSwap, Curve Finance, Balancer, SushiSwap, Radium, Jupiter, DYDX, 1inch, Aerodrome Finance. This exchange differ in supported countries' fees, cryptocurrency regulatory status and trading features. Always verify that an exchange is available and compliant in your jurisdiction before creating account. So यहाँ पे आप लोग के साथ जो जो हमने शेयर करा, यहाँ पे Gemini देखो, Gemini, ठीक है। सो ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, रीजनल एक्सचेंजेस, अपबीट देखो,
पॉपुलर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, ये हो गया हमारा मेन पार्ट जो इम्पोर्टेंट रहता है सब समय. Here are even cryptocurrency exchanges, trading platform that have not been mentioned yet. देखो हैश की एक्सचेंज, बैकपेन एक्सचेंज, बुलिश, कॉइन स्टोर, ये सारा चीज़ ओके. एडिशनल सपोर्ट, एडिशनली ये वाला थॉट चेन. सो यहाँ पे देखो थॉट चेन इज ए डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस chain liquidity protocol that enables user to swap native crypto asset across different blockchain without relying on wrapped tokens or centralized exchanges. Although often discussed alongside crypto company, it is better understood as an open source protocol and ecosystem maintained by contributor rather than a traditional corporation. What it does, you see, the thought chain functions as a cross chain automated market okay. Instead of using order books, it relies on liquidity pools to facilitate swaps between assets such as Bitcoin, Ethereum, and other supported networks. User transactions settle native blockchain asset rather than the wrapped representation. How it works? See, the protocol is built on the Cosmos SDK, okay, and operate as its own layer blockchain. Its native token serve several important roles. It acts as a common asset connecting liquidity pools. Node operator bond run as economical security for the network. Liquidity provider pairs supported asset with run to earn a share of swap fees. Okay. Behind the scene, a swap such as Bitcoin to Ethereum is generally routed through even rule. Okay. All the user experience, it is a single transaction. Now, why it is notable? See, ThoughtChain was among the earliest major protocols to enable native cross-chain swap without requiring wrapped asset or custodial intermediaries. Its infrastructure is used by wallets, decentralized applications and aggregators that want to offer cross-chain trading while allowing users to keep control of their own wallets. The protocol has been operating since 2019 and supports multiple major blockchain ecosystem. So यहाँ पे आप लोग थॉट चेन के बारे में और भी देखो. इकोसिस्टम एंड कंसिडरेशन. थॉट चेन इज ओपन सोर्स एंड यहाँ पे देखो परमिशन लेस, meaning anyone can build application on top of it or interact with the protocol without creating an account as with other decentralized finance system. Users should be aware of risk including smart contract, liquidity risk, market volatility and the evolving regulatory environment surrounding digital assets. So यहाँ से आप लोगों को हमने क्या बताया था, एडिशनल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज एंड एग्रीगेटर क्या क्या है, ऑस्मोसिस, BISQ, थॉट चेन, ओपन ओशन, मार्चा, काओ प्रोटोकॉल, फॉर्ज, लूपरिंग, फोनिक्स, सिराम. ये वाला एडिशनल है, ये वाला हस्की एक्सचेंज, बैकपिंग, बुलिश, एक्समो के बारे में भी देखो यहाँ पे. देन जो बताया मैंने, एडिशनल सेंट्रलाइज एक्सचेंज, गॉडेक्स, देखो गॉडेक्स होता है ऑनलाइन इंस्टेंट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, इंस्टेंटली एक्सचेंज करके दे देता है, ठीक है. और एक जो है हमने जब देखा था वो चीज़, वो ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा. ये हो गया ऑस्मोसिस. काओ प्रोटोकॉल, this one, Kao protocol is a decentralized trading protocol for cryptocurrency swap that aims to execute trader at better price while reducing risk such as maximum extractable value
MEV. Okay, this one short form MEV. An unnecessary slippage. It is best known as powering cow swap, an intent-based trading interface that batches order and uses competitive solver to determine efficient execution path. Okay, so friends, इस वीडियो को यहाँ तक एंड कर रहे हैं, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं. टिल देन बाय.